Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. I am Aamir Mairaj and you are watching Concept Coaching. व्यूवर्स हम मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं और एक्सरसाइज 2.3 ग्रेड 10 यानी क्लास 10 के लिए और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का सिलेबस है और हम एक एक क्वेश्चन जो है ना वो मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ और इंशाल्लाह एक एक क्वेश्चन सॉल्व भी करवाऊंगा आपको। तो एक्सरसाइज 2.3 और आज हमारा लेक्चर नंबर है 63 लेक्चर नंबर 63 है। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.3 और पार्ट नंबर 2 हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये है, फाइंड p if the roots of the equation x square plus 3x plus p minus 2 equal to 0 differ by 2। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेट करेंगे इसके रूट्स, क्योंकि डिफर बाय 2 है तो हम लेट करते हैं लेट अल्फा एंड अल्फा माइनस 2। चूंकि ऊपर उसने लिख दिया डिफर बाय 2 यानी 2 का डिफरेंस है तो हम एक अल्फा ले लेंगे रूट, तो दूसरा ले लेंगे अल्फा माइनस 2। अल्फा एंड अल्फा माइनस 2 आर द रूट्स of the given equation। Then sum of roots is equal to alpha plus alpha minus 2, this equal to minus b over a। अब इक्वेशन में माइनस b जो है माइनस एज इट इज आ जाएगा, b की वैल्यू है 3। ये जो x के नीचे लिखा हुआ है ये b है, x के साथ जो लिखा है ये b है और ये हमारा c है p माइनस 2, दिस इज c, दिस इज b एंड दिस इज c और x के साथ जो लिखा है दैट इज a की वैल्यू है 1। सो दिस इज द सम ऑफ रूट्स माइनस, इसको मैं जरा स्क्रीन को ऊपर करता हूं। सो माइनस 3 इज द सम ऑफ रूट्स माइनस 3। तो जरा इसे सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2, दिस इक्वल टू माइनस 3। सो दिस इज 2 अल्फा minus 2 equal to minus 3. So 2 alpha is equals to minus 3 plus 2 and 2 alpha is equals to minus 1 and this implies alpha is equals to minus 1 by 2। तो ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई, तो इसको मैं बॉक्स में कर देता हूं। So this is alpha equal to minus 1 by 2। Now we will calculate product of roots. We are going to calculate product of roots. Now product of roots. Product of roots. This is alpha into alpha minus 2 and this equal to c over a। c की वैल्यू हमारे पास है p माइनस 2 और a की वैल्यू 1। सो दिस इज p माइनस 2, दिस इज p माइनस 2। सो अब हम यहां पर पुट करेंगे वैल्यू अल्फा की। सो पुटिंग द वैल्यू वी गेट अल्फा इनटू अल्फा माइनस 2, दिस इक्वल टू p माइनस 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा, पुटिंग alpha is equals to minus 1 by 2, we get, स्क्रीन को जरा ऊपर करता हूं, we get अल्फा की जगह हमने minus 1 by 2 पुट करना है। so this is minus 1 by 2 into minus 1 by 2 minus 2, this is equal to p minus 2। So this is minus 1 by 2
and this is, इसका LCM आ जाएगा 2, we get -1 -4 to the equal to p minus 2. So this is -1 by 2, and this is -1 -4, this is -5 over 2, and this equal to p minus 2. तो इतना मैथमेटिक्स मैं समझता हूँ कि आपको आता है कि इसका एलसीएम अगर लें हम 2, तो ये -1 और ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 to the 4, तो इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया -4. सो दिस इज प्लस माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, दिस इज प्लस, एंड 5 1 ज़ा 5 एंड 2 2 ज़ा 4, प्लस 5 और 4, दिस इक्वल टू p minus 2. सो 4 को हम इस 4 को हम यहां से इधर ले जाएंगे और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे. सो वी गेट 5 is equal to 4 into p minus 2. So 5 is equals to 4p minus 8. So इस स्टेट को अब हम ये माइनस 1 8 है, इसको हम यहां से उठाएंगे और इस तरफ ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ. सो वी गेट 5 plus 8 equal to 4p. So 5 plus 8, this is 13 equal to 4p. And this implies p is equals to 13 over 4. This implies that p is equals to 13 over 4. So this is answer. इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूं. So this is the answer, p equal to 13 or 4. तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. Now at the end of this question, I would like to request all of you, so please subscribe my channel and don't forget to ring the bell. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब नेक्स्ट करेंगे. टिल देन, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद.